Yes, good morning, dear students. Today I will tell you your first chapter, the last lesson. Okay, Alphys Daudet is the writer name who composed this chapter. Okay, so come to the point. Paragraph first. I started for school very late that morning and was in great dread of scolding, especially because M. Hamel had said that he would question us on participles, and I did not know the first word about them. So, for a moment, I thought of running away and spending the day out of the doors. It was so warm, so bright, the birds were chirping at the edge of the woods, and in open field back of the sawmill, the Persian soldiers were drilling. It was all much more tempting than the rule for participles, but I had the strength to resist and hurried off to school. So, students, try to understand this paragraph first passage. I started for school very late that morning. I started for school. मैं विद्यालय के लिए रवाना हुआ very late that morning. उस सुबह मैं मुझे काफ़ी लेट हो गया था and was in great dread of scolding, और मुझे डांट पड़ने का बड़ा भय था. स्पेशली का मतलब आमतौर पे या विशेष रूप से, because क्योंकि M. Hamel had said that he would question us on participles. M. Hamel was an English teacher. He would question us on participles, and I did not know. The boy's name was what the boy's names actually. Little French is the boy's name. So I did not know the first word about them. मैं पार्टिसिपल के बारे में एक वर्ड भी नहीं जानता था. फॉर अ मोमेंट, एक क्षण के लिए. आई थॉट ऑफ रनिंग अवे एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर्स. मैंने सोचा कि मैं वहाँ से बच निकलूँ और अपने समय को बिता दूँ दरवाज़ों से बाहर. इट मीन्स आउट ऑफ द स्कूल्स डोर. ओके. It was so warm, the weather was very attractive, and the sun was brightening. The birds were chirping at the edge of the woods. Woods means forest. Okay. जो birds थी, the birds were chirping at the edge of the woods. Woods means forest. And in the open field back of the sawmill, और जो खुला हुआ सा क्षेत्र था वहाँ पे पवन चक्की थी. द पर्शियन सोल्जर्स, पर्शियन के जो सिपाही थे वह ड्रिलिंग, वे बिल्कुल क्या कर रहे थे. ड्रिलिंग मीन्स वॉकिंग अप एंड डाउन, इधर उधर आ जा रहे थे. इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग दैन द रूल फॉर पार्टिसिपल्स. यह पूरी तरह से बिल्कुल टेम्पटिंग था, आकर्षक था, दैन द रूल फॉर पार्टिसिपल्स. बट आई हैड द स्टेट टू रेसिस्ट. लेकिन मेरे पास इतना साहस था रेसिस्ट करने का. रेसिस्ट माने कंट्रोल. ओके. रेसिस्ट एंड हरीड ऑफ टू स्कूल. और मैंने सोचा कि मैं किसी तरह से साहस जुटा लूँ इसको कंट्रोल करने का. एंड हरीड ऑफ टू स्कूल, और मैं जल्दी से विद्यालय से भागने के बारे में सोच रहा था. ओके. सो ये यहाँ मैटर ये था कि एम हेमेल हैज़ गिवन द टास्क ऑफ पार्टिसिपल्स रूल्स to every students, and in the morning time there was a little boy whose name was Little Franz. He was running very fastly to reach at uh, his school, but he knew very well that today I did not prepare my participles rule properly, so how we can tell anything that's related to participles. So he was very much afraid with Mrs. To Mr. M. Hamel. But what happened? We can see it in the paragraph second. Okay, so come to the second paragraph. So students, it's your paragraph second. Then as I hurried by, जैसे ही मैं जल्दी से गया, as fast as, जितना तेजी से, I could go, जितना तेजी से मैं जा सकता था. The blacksmith means लोहार. Wachter, what was the name of it? So I told you that then as I hurried by as fast as I could go, मैं इतना तेज़ी से गया जितना तेज़ी से मैं जा सकता था. as I could go, जितना मैं जा सकता था अपने शक्ति के सामर्थ्य के अनुसार ना. The blacksmith Wachter, what was the name? Wachter, who was there with his apprentice,
Apprentice means he was a learner and he is learning a skill, a good knowledge that will help him to provide his livelihood and bread and butter. Okay. Reading the bulletin. The doctor was busy to read the bulletin. Called after me. He called me. Don't go so fast, Bab. Bab is the title. Okay. Don't go so fast, Bab. Bab means little child. Don't go so fast. Don't run so fast for your school. You will get to your school in plenty of time. It means you will reach to your school in plenty of time. So why you are running so fast? But boy takes it very seriously. He thought that the doctor is just making fun of me. How we can say it? We can understand it in the paragraph third. Okay. So dear students, now I come to the paragraph third. I thought, मैंने सोचा means little friends thought. Okay. I thought he was making fun of me and reached Hammel's little garden all out of breath. Okay. So the students whose name was little friends, he thought that he was making fun of me. He thought about Wachter, who was uh, blacksmith. He was making fun of me for my this condition. This condition I was in condition to running. Okay, and reached M. Hammel's little garden all out of breath. I just read. I tried to reach M. Hammel's garden because first we have to reach M. Hammel's garden. After that we have to reach the school. Okay, the school along with the road of we have to go through the garden to M. Hammel's school. Okay, so I was out of breath. It means M. Hammel's little garden all out of breath. I reached there out of breath. Okay. यूजुअली आमतौर पे व्हेन स्कूल बिगेन जब विद्यालय शुरू होता था देयर वाज अ ग्रेट बस्टल विच कुड बी heard out of in stress. So listen, it means यूजुअली वन स्कूल बिगेन जब विद्यालय शुरू होता था देर वॉज ए ग्रेट बस्टल एक बहुत बड़ा शोर शराबा होता था. बस्टल में सिटी की आवाज़ कर सकते हैं. विच कुड बी हर्ड जिसे सुना जा सकता था आउट इन द स्ट्रीट गलियों के बाहर तक को सुनाई देता था. हर्ड माने सुना जाना. हियर हर्ड हर्ड हियरिंग हियर्स. ओके. दी ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क ये कैसी आवाज़ें थी तो कहा जा रहा है कि ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क डेस्क को ओपनिंग करने का एंड क्लोजिंग मीन्स बंद करने का. लेसन्स रिपीटेड जो लेसन्स का मतलब जो पार्ट थे रिपीटेड मीन्स रिपीट किए जा रहे थे इन यूनिसम एक लहजे एक ध्वनि में एक आवाज़ में वेरी लाउड बहुत ज़ोर से with our hands over our ears to understand better. Wow! It means little friends said we have to understand everything very properly, so we have to put our hands on their ears, otherwise we cannot see anything properly. Okay, and the teacher's a great ruler wrapping on the table, and M. Hamel was taking his iron rod to beat the children because he has given the task of to the students to learn participles rule. Okay, but now it was also still. But now it was also still. Everything was well arranged. Everything was very good manners. I had counted. I had counted on the commotions to get to my desk without being seen. Okay, so students, you know what is commotion? Commotion means noisy confusion. Commotion means noisy confusion. Okay, so I come to the point. I had counted on, I summoned on the commotions. मैंने बिल्कुल क्या किया कमोशन किया. कमोशन मीन्स नॉइजी कन्फ्यूजन अफरा तफरी में उसी अफरा तफरी में आई थॉट दैट आई विल इंटर टू गेट इन माई डेस्क विदाउट बीइंग सीन. द स्टूडेंट्स लिटिल फ्रेंड्स थॉट दैट आई विल इंटर इन द क्लासरूम व्हेन टीचर इज अनेबल टू लुक मी प्रॉपरली. ओके बट ऑफ कोर्स लेकिन वास्तव में that day everything had to be as quiet as Sunday morning, but it was an accident. I reached to my school and that day seems
as Sunday morning. Through the window, खिड़की के माध्यम से, I saw, मैंने देखा, my classmates. Classmates means class fellow, सहपाठी. I saw my classmates, मैंने अपने सहपाठियों को देखा. Already in their places, पहले से ही वो अपने स्थानों पे थे. And M. Hamel walking up and down with his terrible iron ruler under his arm. Wow. So M. Hamel walking up and down with his terrible iron ruler under his arm. M. Hamel was taking his iron ruler, iron stick to beat the children. The reason is that he has given the task to students to learn participles rule. Okay, I had to open the door. आई देखिए, हैज़ टू, हैव टू, हैड टू बाध्यता के लिए आता है, व्यवस्था के लिए आता है. आई हैड टू ओपन द डोर, मुझे दरवाज़ा खोलना पड़ा. एंड गो इन बिफोर एवरीबॉडी, एंड आई हैव टू इंटर इन फ्रंट ऑफ एवरीबॉडी. यू कैन इमेजन, आप कल्पना कर सकते हैं, हाउ आई ब्लश्ड, कितना मैं ब्लश्ड था. यू नो व्हाट इज़ ब्लश्ड? ब्लश्ड मीन्स शर्म से लाल हो जाना, ठीक है ना. बिकेम रेड विथ सेम. So I became red with shame, and how frightened I was, and really I was very frightened. Okay, so students, it's your paragraph 3rd. Now come to the paragraph 4. Dear students, it's your paragraph 4th. Come to the paragraph 4th point. But nothing happened. But anything is not happened there. M. Hamel saw me. M. Hamel saw me and said very kindly, "Go to your place quickly, little Franz. Little Franz, go to your place. We were beginning without you. We have to. I'm going to start the chapters without you, I think." I jumped over the bench. I reached there. I reached to my bench very fastly and sat down at my desk. I took my desk, not still when. Then, when I got a little over my fright, first of all, I tried to smooth myself, my fear. Okay, did I see? Did I see that our teacher had on his beautiful green coat, his frilate shirt, and the little black silk cap? Oh, students, listen. Did I see what happened there? That our teacher had on his beautiful green coat. My teacher, M. Hamel, English teacher, was wearing his beautiful green coat, his frilate shirt, and his shirt was very attractive. फ्राइलेट का मतलब झलरीदार जैसा ऐसा कुछ होता है, या फ्राइलेट मैं आपको बता दूं फ्राइलेट क्या होता है. फ्राइलेट में होता है झालरदार, ठीक है ना. या कह सकते हैं कि विथ ऑर्नामेंट इजेज, उसके जो किनारे थे वो बिल्कुल सजे हुए थे, ठीक है. शर्ट, वो शर्ट था. एंड द लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, एंड ही वॉज आल्सो टेकन लिटिल ब्लैक कैप. ओके, ऑल एम्बॉयडर्ड. ऑल मीन्स कम्प्लीटली एम्बॉयडर्ड. एम्बॉयडर्ड मीन्स डिजाइनिंग, कढ़ाई की गई थी, उस पर डिजाइनिंग बनाया गया था. एम्बॉयडर्ड. ओके, एम्बॉयडर्ड को अगर इंग्लिश में कहना चाहें तो डेकोरेटेड एंड स्टिच्ड विथ patterns and designs, etc. Okay, so that he never wore except on inspection and prize days. और ये जो चीज़ें थी वो कब पहनते थे? इंस्पेक्शन के दिन पहनते थे, ठीक है, और प्राइज डेज के दिन, जब जांच पड़ताल की चीज़ें होती थी उस दिन पहनते थे. और प्राइज डेज मीन्स प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन के दिन पहना करते थे. बिसाइड्स द होल स्कूल सीम्ड सो स्ट्रेंज. इसके अलावा होल Besides, इसके अलावा the whole school seems so strange and solemn. And that day, everything becomes so solemn, so strange. But the things that surprised me most was to see on the back benches that were always empty. The back benchers were always in empty conditions. But now you see the village people sitting quietly like ourselves, old Hauser. So today the class was full of the students as well as some of the villagers also. The first one discussed here, old Hauser. Who was old Hauser? With his three corned hat. Old Hauser has wearing here three corned hat. उन्होंने तीन तरह से मुड़ा हुआ, तीन तरीके से निकला हुआ एक समोसे की आकृति का उन्होंने हैट, टोपी लगाया हुआ था. द
फॉर्मर मेयर, और वहाँ पे पुराने एक मेयर भी थे, मतलब पुराने पदवी पे पहले रहे थे, अब इस समय नहीं है। द फार्मर पोस्ट मास्टर, और पिछले पोस्ट मास्टर भी थे। एंड सेवरल अदर बिसाइड्स, उनके अलावा अन्य भी लोग थे। एवरीबडी लुक सैड, प्रत्येक व्यक्ति कैसा दिखाई दे रहा था? सैड मीन्स दुखी। एंड हॉजर हैड बॉट एन ओल्ड प्राइमर, उन्होंने जो हॉजर थे वो अपना पुराना प्राइमर का बुक लाए थे। थम्ड एट द इजेस, जिसके किनारे बिल्कुल, जिसके किनारों पे उसको थम्ड किए थे। थम्ड एट का मतलब पकड़े हुए थे। एंड ही हेल्ड इट ओपन ऑन हिज नीज, एंड ही हैज़ टेकन ही दैट बुक, दैट प्राइमर बुक ऑन हिज नीज, अपने घुटनों तक उसको रखे हुए थे। विथ हिज ग्रेट स्पेक्टल्स लेइंग अक्रॉस द पेजेस, और उनके जो स्पेक्टल्स थे, स्पेक्टल्स माने चश्मे, लेइंग अक्रॉस द पेजेस, पेजेस पर वो पड़े हुए थे, रखे हुए थे। ओके, so students, it's your paragraph 4. So dear students, now I come to the paragraph 5. While I was wondering about it all, when I was considering about it all, M. Hamel mounted his chair. M. Hamel has taken his chair. He was sitting in his chair, and in the same grave, or in the same grave, listen, in the same grave and gentle tone which he had used to me, said, "My children, this is the last lesson I shall give you. Today I will explain my last lesson. The order has come from Berlin to teach only German in the schools of Heiselek and Lorraine. The listen. The new master comes tomorrow." So what he says? He says that today is my last lesson, and the next day your new teacher will come who teaches you German language. This is your last French lesson. I want you to be very attentive. So here I explain you that M. Hamel English teacher says to every students that today is my last lesson, and there is a very urgent information for all of you that next day, it means tomorrow, your new teacher will come and he will teach you German language. The order come from Berlin. Okay, click here. The order has come from Berlin to teach only German. Okay, so come. What a thunderclap these words were to me. So these words was really very thunderclap. Sorry फिर से बोलते हैं. What a thunder clap these words were to me. Thunder clap means startling and unexpected. I did not expect like this. Okay. Oh the wretches, oh the wretches. Wretches means होता है unlucky fellows. Oh the wretches that was what they had put up at the town hall. किस प्रकार की चीज़ें टाउन हॉल में घटित हो रही हैं, मैंने ऐसा विचार किया. So dear students, now come to the paragraph 6. Listen. My last French lesson, why I hardly knew how to write. I should never learn anymore. I must stop here then. Oh, how sorry I was for not learning my lessons, for seeking birds' eggs are going sliding on the shore. My books that that had seemed such a nuisance a while ago, so heavy to carry. My grammar and my history of the sands were old friends now that I could not give up. And am Hamel to the idea that he was going away, that I should never see him again, made me forget all about this ruler and how cranky he was. So students, just listen very carefully this passage. My last French lesson. Why? My last French lesson. Why? I hardly knew how to write. मैं बहुत कठिनाई से जानता था कि मैं कैसे, ठीक है, क्या मुझे अभी तक लिखना नहीं आता था. मैं कैसे बताता हूँ फिर सुनिए. आई हार्डली न्यू, मैं बहुत कठिनाई से जानता था. हाउ टू राइट, कैसे लिखें. आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, कारण क्या था कि आई शुड नेवर लर्न, मैंने तैयार नहीं किया था. ठीक है. आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, अब मैं आगे और कुछ भी नहीं सीख सकूँगा, ऐसा वो सोचा है. कौन सोच रहा है? लड़का सोच रहा है जिसका नाम लिटिल फ्रेंच से संबोधित किया गया है. ठीक है.
आई मस्ट स्टॉप देयर, मुझे यहाँ रुकना मैं यहाँ रुक सकता हूँ। देन माने तब, ओह हाउ सॉरी आई वॉज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन्स। द लिटिल फ्रेंच वॉज जस्ट फीलिंग वेरी बैड कंडीशंस फॉर not learning his lessons. He was busy some of the task. What was the task? The tasks were फॉर सीकिंग बर्ड्स एग्स। जो लड़का था वो कहाँ पे व्यस्त रहता था? तो कहा जा रहा है कि सीकिंग माने होता है खोजना ढूंढना, ठीक है ना। बर्ड्स एग्स, वह चिड़ियों के अंडों को ढूंढता था। आर गोइंग स्लाइडिंग ऑन द सार, सार का मतलब एक, सार इज अ प्लेस वेयर ही वॉज इन स्लाइडिंग कंडीशंस, वहाँ पे वो फिसलता था, सरकता रहता था बर्फीले स्थान पे। माई बुक्स दैट हैड सिम्ड सच अ न्यूसेंस, मेरी जो किताबें थीं ये कैसी प्रतीत होती थी? न्यूसेंस, किसके लिए? लड़के के लिए। अ वाइल एगो, कुछ समय पहले के लिए। सो हेवी टू कैरी माई ग्रामर, और ग्रामर लाना इसके लिए सो हेवी था। सो हेवी का मतलब काफ़ी भारी लगता था। एंड माई हिस्ट्री ऑफ द सेंट्स, और जो इतिहास, जो साधु सज्जन लोग थे उनसे संबंधित जो इतिहास था, वर ओल्ड फ्रेंड्स, ये मेरे पुराने मित्र की तरह से थे। नाउ डैट आई कुड नॉट गिव अप, जिसको मैं अभी नहीं त्याग नहीं पाया था। गिव अप माने अबेंडन, त्यागना। एंड एम हेमेल टू द आइडिया दैट ही वॉज गोइंग अवे, एंड एम हेमेल टू और एम हेमेल भी द आइडिया दैट ही वॉज गोइंग अवे, उनके पास भी विचार था कि वो जा रहे थे। डैट आई शुड नेवर सी हिम अगेन। द चाइल्ड थॉट दैट आई विल नॉट सी एम हेमेल्स फेस अगेन, made me forget. So this incident made me forget all about his ruler. I forgot that he was a great ruler, he was a very strict teacher. These types of ideas I just left these types of ideas in my mind. And how cranky he was very cranky. Cranky means sunky, eccentric. In these types of ideas I forgot there. Okay, so students, हमने लगभग आधा बता दिया है। वीडियो आप लाइक सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड में इसको डिस्ट्रीब्यूट करिए, मतलब उनको सेंड कीजिए, जिससे बेनिफिट आपको मिल सके। आगे जिन जिन प्रकार की चीज़ें आपको चाहिए, जिससे भी रिलेटेड चाहिए, आप कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं वो सब चीज़ें आपके लिए बनाऊंगा। ओके, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग टुडे।